जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आज सुबह के ध्यान में आप सभी सहजी भाई बहनों का हार्दिक रूप से स्वागत है। परम पूजनीय श्री माता जी निर्मला देवी जी की श्री चरणों में नतमस्तक प्रणाम करेंगे और अपनी कुंडलिनी को उठाकर कवच को धारण करेंगे। सुनिश्चित कर लेंगे आवश्यकता अनुसार हमारे बाईं ओर 1, 2 या 3 कैंडल जले हों। जय श्री माता जी। श्री माता जी, कृपा कर आज सुबह का ध्यान आप हम बच्चों से करवा लीजिए। आप ही तो जगत जननी है माँ। कृपा कर आज सुबह का ध्यान हम बच्चों से आप करवा लीजिए। श्री माता जी, अपने राइट हैंड को लेफ्ट सहस्त्रार पर रखेंगे। श्री माता जी, कृपा कर मेरे मस्तिष्क में आइए। श्री माता जी, कृपा कर मेरे मस्तिष्क में निवास कीजिए। आइए श्री माता जी, मेरे मस्तिष्क में आइए। मेरे मस्तिष्क में अपना निवास स्थान बना लीजिए। श्री माता जी, श्री माता जी, आप ही इस मस्तिष्क को नियंत्रित कीजिए। कृपया इस मस्तिष्क का मार्गदर्शन आप अपने दैवी विवेक से कीजिए। श्री माता जी, प्लीज कम इन माय ब्रेन। प्लीज reside in my brain. Please make your room in this brain. आइए श्री माता जी, मेरे मस्तिष्क में आइए। अपने राइट हैंड को लेफ्ट हार्ट पर रखेंगे। श्री माता जी, कृपा कर मेरे हृदय में आइए। कृपया मुझसे मेरा हृदय स्वच्छ करवा लीजिए ताकि आप वहां विराजें। श्री माता जी, कृपया अपने चरण कमलों को मेरे हृदय में विराजें। आपके चरण कमलों की पूजा मुझे मेरे हृदय में करने दीजिए। श्री माता जी, मुझे भ्रम में मत रहने दीजिए। मुझे भ्रांतियों से दूर कीजिए।
मुझे शाश्वत तत्व में रखिए, मुझे वास्तविकता में रखिए। श्री माता जी, मुझे दिखावे की चमक दमक से दूर रखिए। मेरा चित्त सदैव मेरे हृदय में आपके श्री चरण कमलों में रहे। श्री माता जी, मुझे सदैव निरानंद में रखिए। आइए श्री माता जी, मेरे हृदय में आइए। मदर, प्लीज कम इन माई हार्ट। लेट मी क्लीन माई हार्ट सो दैट यू आर देयर। आइए श्री माता जी, मेरे हृदय में आइए। दोनों हाथ भूमि माता पर रखेंगे। हम 3 बार ओमकार का उच्चारण लेंगे। ओमकार हमारे मूलाधार से, सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए सहस्त्रार से विराट में लेके जाएंगे। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार से अंदर लाते हुए, रीढ़ की हड्डी से होते हुए धरती माता में ले जाएंगे। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार से अंदर लाते हुए, विशुद्धि से होते हुए, दोनों कंधों से होते हुए, दोनों हाथों से भूमि माता में छोड़ देंगे। यह प्रक्रिया हम 2 से 3 बार करेंगे। श्री माता जी, ये सभी नकारात्मकताएं, ये सभी जड़ताएं मुझे नहीं चाहिए। श्री माता जी, कृपा कर आप इसे भूमि माता में विलीन करा दीजिए। श्री माता जी, मेरे अंदर का सारा आलस्य, सारे जड़त्व, सारी दोष बाधाएं भूमि माता में विलीन करा दीजिए। श्री माता जी, मुझे संतुलन प्रदान कीजिए। राइट हैंड गोद में रखेंगे, लेफ्ट हैंड भूमि माता पर रखेंगे। श्री माता जी, आप ही तो साक्षात श्री गणेश हैं। कृपा कर मेरे स्वयं के श्री गणेश पूर्णतः जागृत करा दीजिए। श्री माता जी, श्री माता जी, मेरे गौरी माता के श्री गणेश, मुझे पवित्रता प्रदान करने वाले श्री गणेश,
मुझे अबोधिता प्रदान करने वाले श्री गणेश, पूर्ण रूप से जागृत करा दीजिए श्री माता जी। श्री माता जी, कृपा कर मेरे नाभि चक्र के श्री गणेश, मुझे संपूर्णतः समाधान प्रदान करने वाले श्री गणेश, पूर्णतः जागृत करा दीजिए श्री माता जी। श्री माता जी, कृपा कर मेरे स्वाधिष्ठान चक्र के श्री गणेश, मुझे शुद्ध विद्या प्रदान करने वाले श्री गणेश, मुझे शुद्ध चित्त प्रदान करने वाले श्री गणेश, पूर्णतः जागृत करा दीजिए श्री माता जी। श्री माता जी, मुझे स्वयं का गुरु बनाने वाले श्री गणेश, पूर्णतः जागृत करा दीजिए श्री माता जी। श्री माता जी, मेरे अनहद चक्र के श्री गणेश, मेरे जगदम्बा माँ के श्री गणेश, मेरे अंदर का सारा भय दूर करने वाले श्री गणेश, पूर्णतः जागृत करा दीजिए श्री माता जी। श्री माता जी, मेरे शिव पार्वती जी के श्री गणेश, मेरे सीता राम जी के श्री गणेश, पूर्णतः जागृत करा दीजिए श्री माता जी। श्री माता जी, कृपा कर मेरे विशुद्धि चक्र के श्री गणेश, मेरे राधा कृष्ण जी के श्री गणेश, मुझे माधुर्यता प्रदान करने वाले श्री गणेश, मुझे स्थित प्रज्ञा स्थिति प्रदान करने वाले श्री गणेश, पूर्णतः जागृत करा दीजिए श्री माता जी। श्री माता जी, कृपा कर मेरे आज्ञा चक्र के श्री गणेश, मेरे जीसस मेरी माता के श्री गणेश, मुझे क्षमाशीलता प्रदान करने वाले श्री गणेश, पूर्णतः जागृत करा दीजिए श्री माता जी। श्री माता जी, कृपा कर मेरे सहस्त्रार एवं उसके आसपास के सभी पीठों के श्री गणेश, पूर्णतः जागृत करा दीजिए श्री माता जी। श्री माता जी, मेरे सहस्त्रार के ऊपर के सभी चक्रों के श्री गणेश, पूर्णतः जागृत करा दीजिए श्री माता जी। श्री माता जी, कृपा कर मेरे अनु रेणु के श्री गणेश, मेरे रोम रोम में बसे श्री गणेश, पूर्णतः जागृत करा दीजिए श्री माता जी। संपूर्ण चित्त को विराट में स्थित रखेंगी। यहीं से चित्त का एक भाग मूलाधार चक्र की राइट पंखुड़ी पर ले आएंगी। श्री माता जी, आप ही तो साक्षात श्री कार्तिकेय हैं, शिव पुत्र श्री कार्तिकेय हैं, देवों के सेनापति हैं। कृपा कर मेरे पूर्व जन्मों के, पूर्व योनियों के दोष दूर करा दीजिए श्री माता जी। सभी स्वभाव दोष दूर करा दीजिए। जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म में आके बैठे हैं, उन्हें दूर करा दीजिए श्री माता जी। श्री माता जी, मुझे कार्तिकेय जी का सत्सद विवेक प्रदान कीजिए, ताकि मैं एक सच्ची सहजयोगिनी बन सकूं। श्री माता जी, मेरे अंदर की सभी प्रतिक्रियाएं दूर करा दीजिए। श्री माता जी, ये बात बात पे जो रिएक्शंस आते हैं, जो मन ही मन में रिएक्शंस चलते हैं, इन्हें दूर करा दीजिए श्री माता जी। मुझे शून्य प्रतिक्रिया स्थिति प्रदान कीजिए। श्री माता जी, आप ही तो साक्षात राक्षस हंत्री हैं। राक्षसों के हनन हेतु आप आई हैं। कृपा कर मेरे अंदर छिपी ऐसी सभी राक्षसी प्रवृत्तियां, सभी राक्षसी विचार, सभी राक्षसी व्यवहार आप दूर करा दीजिए। आपकी राक्षस हंत्री शक्ति से दूर करा दीजिए श्री माता जी। मंत्र लेंगे श्री कार्तिकेय साक्षात, तत्पश्चात राक्षस हंत्री साक्षात। ओम
त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् राक्षसहन्त्री साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। लेफ्ट हैंड गोद में रखेंगे, राइट हैंड धरती माता पर रखेंगे। संपूर्ण चित्त को मूलाधार चक्र की लेफ्ट पंखुड़ी पर ले आएंगे। श्री माता जी, आप ही तो साक्षात श्री निर्मल गणेश हैं। श्री माता जी, कृपा कर मेरे लेफ्ट मूलाधार की सभी दोष बाधाएं दूर करा दीजिए। श्री माता जी, मुझे श्री निर्मल गणेश जी की अबोधिता शक्ति प्रदान कीजिए ताकि मैं स्वयं गणेश बन जाऊं, मेरे अंदर के सारे दोष दूर हो जाएं। श्री माता जी, श्री माता जी, मेरे लेफ्ट मूलाधार में अभी भी मेरे अंदर जिस भी प्रकार की कंडीशनिंग्स हैं, जिस कंडीशनिंग से मैं अभी भी अनभिज्ञ हूँ, उन्हें दूर करा दीजिए। श्री माता जी, मुझे सभी कंडीशनिंग से दूर करा दीजिए। श्री माता जी, मेरे अंदर अभी भी जिस भी प्रकार की हवस है उसे दूर करा दीजिए। श्री माता जी, कृपा कर मुझे गणेश जी की अबोधिता शक्ति प्रदान कीजिए। मुझे आपका श्री निर्मल गणेश बना लीजिए। श्री माता जी, मंत्र लेंगे, श्री निर्मल गणेश साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त को मूलाधार चक्र की पिछली पंखुड़ी पर ले आएंगे। श्री माता जी, कृपा कर मुझे पवित्रता प्रदान कीजिए। श्री माता जी, मेरी आंखों में पवित्रता हो, मेरे बोल चाल में पवित्रता हो, मेरे रहन सहन में पवित्रता हो। श्री माता जी, मेरे रोम रोम में पवित्रता भर दीजिए। श्री माता जी, अभी भी मेरे पवित्र बनने के आड़ आ रही सभी दोष बाधाओं को आप दूर करा दीजिए। श्री माता जी, श्री माता जी, मुझे माता अनुसुईया की पवित्रता प्रदान कीजिए। मुझे माता स्वदामिनी जी की पवित्रता प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त को मूलाधार चक्र की अगली पंखुड़ी पर ले आएंगे। श्री माता जी, मुझे शुभता प्रदान कीजिए ताकि मैं जहाँ भी जाऊं, जहाँ भी मेरा चित्त जाए, वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाए, शुभता से भर जाए। ऐसी शुभता, ऐसी मांगल्यता मुझे प्रदान कीजिए। श्री माता जी, ताकि मैं जहाँ भी जाऊं, वहाँ का वातावरण आत्म साक्षात्कार देने और आत्म साक्षात्कार लेने के लिए अनुकूल हो जाए। संपूर्ण चित्त को सेंटर मूलाधार चक्र पर ले आएंगे। श्री माता जी, कृपा कर मुझे श्री गणेश जी की सभी शक्तियां प्रदान कीजिए। श्री माता जी, मुझे आपका श्री गणेश बनना है। श्री माता जी, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे केवल और केवल
आपका श्री गणेश बनना है श्री माता जी। संपूर्ण चित्त लेफ्ट मूलाधार पर लाते हैं। श्री माता जी, आप ही तो साक्षात श्री भैरवनाथ हैं। आप ही मेरे ईड़ा नाड़ी के स्वामी हैं। कृपा कर आपकी बाधा नाशक शक्ति से मेरी ईड़ा नाड़ी की सभी दोष बाधाएं दूर करा दीजिए। कृपा कर आपकी बाधा नाशक शक्ति का सुरक्षा कवच मेरी ईड़ा नाड़ी को प्रदान कीजिए, ताकि कोई भी दोष बाधा मेरे आस पास भी ना आ सके, मुझे छू भी ना सके, मेरे सहस्त्रार से मेरे अंदर प्रवेश ना कर सके। ऐसा सुरक्षा कवच मुझे प्रदान कीजिए। कृपा कर मेरी ईड़ा नाड़ी को प्रकाशित बना दीजिए, प्रवाहित बना दीजिए, स्वयं चलित बना दीजिए। श्री माता जी, आप ही तो साक्षात श्री महाकाली हैं। आप ही तो मेरे कुल की स्वामिनी हैं। श्री माता जी, आप ही तो साक्षात श्री महाकाली हैं, भद्रकाली हैं, काली कल्की हैं। आप ही मेरे अंदर भद्रता को स्थापित कराने वाली हैं। आप ही मेरे अंदर की सभी अभद्रता को दूर कराने वाली हैं। श्री माता जी, सतयुग में जाने के लिए मेरी स्वच्छता करा दीजिए। कृपा कर मेरी संपूर्ण ईड़ा नाड़ी की स्वच्छता करा दीजिए। मेरी ईड़ा नाड़ी पर अभी भी जो भी जड़त्व है, भूतकाल है, उन्हें भूमि माता में विलीन करा दीजिए। श्री माता जी, श्री माता जी, मेरे लेफ्ट मूलाधार में मेरे और मेरे माता पिता के और उनके मातृकुल और पितृकुल से आ रही सभी दोष बाधाएं धरती माता में विलीन करा दीजिए। मेरे पति और उनके माता पिता और उनके मातृकुल और पितृकुल से आ रही सभी दोष बाधाएं धरती माता में विलीन करा दीजिए। सभी बाधाएं जो मेरे मूलाधार तत्व के आड़ आती है, वह सभी बाधाएं भूमि माता में विलीन करा दीजिए। श्री माता जी, मेरे लेफ्ट स्वादिष्ठान में मेरे और मेरे माता पिता की और उनके मातृकुल और पितृकुल से आ रही सभी दोष बाधाएं धरती माता में विलीन करा दीजिए। मेरे पति और उनके माता पिता और उनके मातृकुल और पितृकुल से आ रही सभी दोष बाधाएं धरती माता में विलीन करा दीजिए। सभी अविद्या, कुविद्या, पिशाच विद्या, मर्दन विद्या, काली विद्या, तांत्रिक मांत्रिक विद्या, ये सभी आप दूर करा दीजिए। मेरे निर्मल विद्या पाने के आड़ आने वाली सभी बाधाओं को आप दूर करा दीजिए। भूमि माता में विलीन करा दीजिए। श्री माता जी, श्री माता जी, कृपा कर मेरे लेफ्ट नाभि में मेरे माता पिता के और उनके मातृकुल और पितृकुल से आ रही सभी दोष बाधाएं धरती माता में विलीन करा दीजिए। मेरे पति और उनके माता पिता और उनके मातृकुल और पितृकुल से आ रही सभी दोष बाधाएं धरती माता में विलीन करा दीजिए। श्री माता जी, सभी बाधाएं, सभी नकारात्मकताएं, सभी असमाधान, असंतुष्टि, अशांति भूमि माता में विलीन करा दीजिए। श्री माता जी, ये सभी मुझे नहीं चाहिए। अपने दाहिने हाथ को बैक आज्ञा पर ले आएंगे। श्री माता जी, जाने अनजाने में मुझसे या मेरे माता पिता से आपकी शान के खिलाफ यदि कोई भी गलत कार्य हुआ है, तो कृपया करके श्री माता जी मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए श्री माता जी। श्री माता जी, मेरे सभी पुरखों की सभी दोष बाधाओं से मुझे मुक्त करा दीजिए।
श्री माता जी, कृपा कर मेरे सभी पुरखों को मुक्त करा दीजिए, उनकी सभी दोष बाधाओं से मुझे मुक्त करा दीजिए श्री माता जी। बैक आज्ञा पर टैप करेंगे। राइट हैंड गोद में, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। श्री माता जी, आप ही तो साक्षात श्री महासरस्वती हैं, मेरी पिंगला नाड़ी की स्वामिनी है। श्री माता जी, मेरी पिंगला नाड़ी की सभी दोष बाधाएं, सभी उष्णता, सुप्रा कॉन्शियस की सभी दोष बाधाएं आकाश तत्व में विलीन करा दीजिए। कृपा कर मेरी पिंगला नाड़ी की संपूर्णतः स्वच्छता करा दीजिए। पिंगला नाड़ी की सभी दोष बाधाएं आकाश तत्व में विलीन करा दीजिए श्री माता जी। श्री माता जी, आप ही तो साक्षात श्री हनुमान हैं। श्री हनुमान जैसे राम काज करने को आतुर रहते, वैसे ही आप मुझे भी बना दीजिए श्री माता जी। श्री माता जी, कृपा कर मुझे हनुमान जी का वायु तत्व प्रदान कीजिए। श्री माता जी, मुझे हनुमान जी की नवधा सिद्धियां प्रदान कीजिए। श्री माता जी, कृपा कर मेरे चित्त को शांत करा दीजिए। मेरे चित्त की चल विचल को आप दूर करा दीजिए श्री माता जी। श्री माता जी, मेरे चित्त में एकाग्रता प्रदान कीजिए। मेरे चित्त को हिमालय की ठंडक प्रदान कीजिए श्री माता जी। चंद्रमा की शीतलता प्रदान कीजिए। दोनों हाथ गोद में ले आएंगे। संपूर्ण चित्त को सहस्त्रार के ऊपर ले जाएंगे। चित्त को विराट में स्थित करेंगे। इसी स्थिति में रहते हुए हम श्री माता जी की अमृतवाणी आत्मसात करेंगे। श्री माता जी, आपकी आज की अमृतवाणी मैं पूर्ण रूप से आत्मसात कर सकूं। श्री माता जी, हमें आज का आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। I'm sorry for being late. I did not know that this program is in a beautiful place like this. And here you see a beautiful painting of Michelangelo expressing the desire of the divine, your Father, to save you, to help you out, and is working out. In Germany, we have had very great
aggressive happenings. And that brought forth a devastating effect on the Western life all over. The value systems were broken. The idea of dharma was disturbed. Women started behaving like men, and so many people died. Very young people died, very, very young. All their desires were not fulfilled. All their life gave them nothing but war. That was a kind of a heat wave that came, destroying all the subtler things. When the nature gets its respite or is angry, it destroys only gross things. But when human beings start destroying, they destroy even the subtler things like your value system, your character, your chastity, your innocence, your forbearance. So now the war is on the subtler level. We have to now understand that all these things have brought such a shattering effect in the West, on the Western personality. So the first effort one has to do is to repair it, to put it straight, make it stand on its own legs. Because people lost their personality, their tradition. They had no moorings, no roots. And they started moving towards anything that was brought in as some sort of a intellectual experience. The women became very independent and they thought they can work out their own problems. That they thought they can become like men. Here the problem started, even in a worse way. Because woman is a woman, and a very little thing which is called a man in her. And when she tries to avoid what she has and develop something that she has very little, then she becomes funny. But she may be possessed by so many men who are dead. The desire to become manly can attract so many bhoots who want to enter into woman's mind. And when they enter, they have the garb of a woman and mind of a devil. And the women can not see it, because maybe with those devilish things in the worldly way they might be successful. They might be better off.
maybe they can dominate everyone. They might become meticulous like men, absolutely matter of fact, very neat, tidy, clean, devoid of all beauty and sweetness. Then these women ultimately become like vampires. So though the war is over, it is working through the women of Germany, I think. I had heard this attack had come before also, and there were women called as Amazonic. Now that history is repeating itself again. The other day I had an interview with a German lady, and I was amazed at her attitude because I felt she is still a Nazi in her, some Nazi vote is sitting in her. She was a double personality. One way she was talking sweetly, another way she was a Nazi. And a fascist. Very cunningly, they have got arguments. The first thing they can do is to say that we are siding with downtrodden people, like India. Indians are Aryans, we are Aryans, and we are people who are sympathizing with Aryans. Indians are spiritual people, and they feel they are like Indians of all the things. Can you believe it? The quality of life should improve, is the point. The quality of men is different from that of women. I have told you many a times. And if women try to be manly, then they cannot achieve anything proper. We have had many like this. You have seen Mao's wife. You have seen Mrs. Chiang Kai-shek. Now this new lady, Carlos her name is Marcos. So many women like that. They always make a mess of things when they try to be manly. In the history, we have many women. In India, women are very well equipped. We have had women like Jhansi Ki Rani, who fought against the British. She was a widow. She tied her child on her back and fought the British. They say that her horse jumped from 180 feet from the turret of a fort. And the Britishers have written down that though we have got Jhansi, the victory comes to us, but glory goes to Jhansi Ki Rani. We have had great women in India. Like Noor Jahan was another great woman. We had Chand Bibi, Ahilya Bai, but they were all women. They didn't have ego of men. When it comes to one can work in the offices with men, but they need not become men. I'll tell you an example of my own. I had to build our house in Lucknow. I did it in a real woman style. And I built a very good house, better than any man could build, in a very, very cheap way. Like a man would go, first of all, he'll get an architect.
go and measure everything. Then I'll try to fit everything into it beforehand. Then he will, in his ego, go to some expensive place, shop, get something expensive, be cheated by that. Then again, in his ego, he'll go and get some very expensive labor and appoint somebody. He'll be in charge of everything, in charge. I did in a very different way. I had money, so went and found out who are the best people, who have the best bricks. The house was to be built by bricks. Then what else do you need? Just like a woman would cook her food. You need also sand, all right? Then you need cement and you need iron bars and labor. So I didn't go the way men went now. I found out the man who was selling the best bricks. So he said, I have no money because I have to put up those kilns and fill them up with the bricks, and for that you require initial money. I said, all right, I'll buy one whole kiln from you, whole one. How much will you take from me? He said, 5,000 rupees sufficient. But if he said, if the kiln goes off or there's something wrong with it, if it is misfired, then it is to your lookout. I said, doesn't matter. You put one kiln in my name. So I bought a complete kiln from him, complete. Kiln is a thing where they put all the bricks, you see, and then cover it with mud and fire it from ground. Sometimes it could be that the whole thing can go into a waste or crumple down. I said, you do like that. Only 5,000. When it is nicely fired and all that, it would cost you nothing short of 50,000 rupees. Then I went to the river and I said, how much for a one part, as they call it, a big area of sand? They said, at this time, when it is summertime, it's very little. But in winter time, it will be quite a lot. A man would go, he'll say, all right, now you need so much, bring it now. Then you will need more, you bring it now. But I didn't do that. I said, summertime is a nice thing, cheap, you are getting, why not buy the whole? So I bought the whole part, the whole area of that sand. All right. Then I went for the ironmongers. I said, now what about iron? They said, you have to order. But if you order in bulk, then we'll give you much cheaper. And cash down you have to pay so much. I said, all right. I ordered it. So it was all ready. Just like we do for cooking, you get everything ready-made, ready there. Then what we needed was wood. So they said wood will come from Nepal. I said, all right. What else? They said from any other forest it can come. So I went to a forest in the center of India called Jabalpur. There I ordered. The whole wood was cut, newly cut. And in an auction I bought a lot of wood from there. And I got all that there. Plus I got the marble from there. This marble was never used before, anywhere. I said, it's very simple. I can use this marble for everything. So I got marble and wood together from that place. Then the labor. Then I asked my friends if they knew any good workers who are good at masonry work. They said, yes, this one is good, that one is good. So I called all of them. I said, see, now you can stay with me in this house and I'll feed you very well and I'll give you food and I'll look after you very well.
So they all settled down with their family. And I used to cook for them. By cooking, I won them over. And they would do anything for me. Absolutely. They are so kind to me. They would produce new uh, technique that they knew. They would produce an effect of marble out of the cement. All kinds of art that they had, they put there. So such a big house with 20 bedrooms and 5 drawing rooms, dining rooms was created within 1 year's time. Not only that, but the price of the house, nobody can believe, was 1/10 of the one that the architect would have taken. But it was all written so well, everything done so well, because I didn't know how to write accounts. So what I used to do, every day I used to say, all right, today I take out so much money. Then this much was spent. Like that I wrote every day. And not one single rupee was missing in that. So nobody could prosecute me. No problem. Otherwise, all the officers who built their houses there had to go through lots of problems. Their income was taxed, this thing, nothing happened. And I got such a huge house made in such a little money. And such a house that people said that even Taj Mahal may fall down, this will not fall. But I made a good foundation, everything, because I had bricks so cheap. The whole of the thing I bought for no price at all, and half of it I sold back because so much remaining. Then whatever I had bought, the sand, I brought it, sold half of it because I didn't need it at a double the price, so I got my sand free. The wood that I had brought from there, I got it properly chiseled out, and I had a little tank in which I put it. So the whole thing became absolutely, what you call that, weatherproof. I got it out, and half of it I used, half of it only, for 100 windows and 60 doors. And the rest of it I sold. And even the chips were sold as burning for wood. You see, burning wood, what you call that. So you can imagine, something was sold as timber and some for the hearths. But I had to do cooking for them. I had to look after their comfort. I got them nice blankets and nice beds to sleep and this and that, so they were very happy. That's how a woman works out. And everybody was amazed. They could not find any faults with my accounts. They could not find faults with anything. And I told all my husband's friends to keep 5 miles away from me. Because he was working with the Prime Minister. People would have said that, all right, she's taking bribes and things like that. Then there was another problem was that they would have come and told me this not good, that not good. I kept them out because only they can argue. Men can only argue. Women produce the results. No conferences, nothing. I said, nothing doing. Let me do the job myself. Very nicely in the company of all these people, I built the house, a beautiful house, which I think they have taken a film, and you might be able to see the house that I built. So when the woman, who is a Sahajogini, must develop these special qualities, because she is very intuitive, woman is very intuitive. She always reaches the right conclusion in no time. If she is a woman, but if she is half man and a little of a woman, then I don't know what sort of a thing it is. So a woman should try to be a woman. She's so powerful. She's powerful like this Mother Earth, who can bear every sort of thing, and she can give the best that is with her. Extremely sacrificing, extremely giving, forbearing, loving, forgiving.
When men develop the woman's quality, then they become saints. But not the woman's quality that they run after women. This kind of a nonsense is not there. They have to be Veeras, they have to be chivalrous people, they have to be brave. They have to be brave, but with that, they have to develop compassion, forgiveness. But I think it is the other way around in Germany very much, and I find around also among Western surgeons this is a very common affair going on. Women develop horrible egos. In India, women work. Everything they do. We have had great orators since long time, well known. But they don't have ego. My mother was honest. In those days when there were only 2 or 3 women who had never think of surgery. But I have met one extraordinary woman. I must say she was a real woman. She said, Mother, because I'm schizophrenic, I want to get out of surgery. I divorced my husband. I don't want to see my children. Surg Yoga is much more important than me, than my husband and my children. There's a woman, she said, I am schizophrenic from childhood. I have discovered it now and it comes back. But mostly women are worried about themselves. Oh God, I'll have to leave my husband. Means what they were doing was to sponge on the husband. I'll have to leave my children. What about leaving Sahaja Yoga? If you think Sahaja Yoga is the most important, you can get rid of your schizophrenia also. Why should God help you? You are just thinking like ordinary women about yourself, only worried about yourself. Not worried about surgery. Same with some men, but men are not so much frightened. Because they think they can stand on their legs. And women should also know now they are surgeoginis, that they are surgeoginis, and mother is going to look after them. But if you are worried about yourself only, your husband, my house, my children, then you are a gone case. You are no more a woman now. It's not a sign of a good woman. A woman is that who loves all the children. Her loving capacity is great. But if she becomes miserly, if she becomes small-minded, then she's not a woman. I told you about my granddaughters. I asked them what do you want to be. They're very small. So they said we want to be a nurse or an air hostess. So I said, why? What is so great about these jobs? They said, grandmother, in these 2 jobs only you can feed people. There's no other job in which you can really feed others. The joy of feeding others is greater than writing files in the office. Absolutely, I tell you. It's a horrid job to write files in the office. It's better to do some nice cooking, thinking so many are going to eat and enjoy it, than to do this dirty job. But women have lost their heads. They are not level-headed now. They become stupid. Now in Germany you have to be very careful. In Austria you have to be very careful. Austrian women are great, but I would say German women. That you don't try to become men. First of all, the best way to stop it is not to talk too much. If you start talking like men, then all the boots will enter into you and start talking like men only. And then you will see how the men are controlled. We Indian women know how to control our men much better than you do. Why we don't have divorces? Why we don't have problems? We quarrel, all right, doesn't matter. But our men don't run after another women. We don't dress up, so much.
We don't go to hairdressers. We don't have this beauty aids, all that. So develop your self-respect. You are the Shakti. You are the power. If you make your men cabbages, what sort of children you will have? Cabbages only. Respect them. Make them men. Enjoy their manliness. Then they'll never give you up. There's no competition between the two. I find the main problem today in Germany is that the women have lost their senses. This is, I feel, absolutely about German women. Take to music, take to art. So much scope is there. Today, who is remembered? See, in here, who is remembered? The musician Mozart. Everyone remembers Mozart. Even on a chocolate, you'll find a Mozart there. I don't know, poor thing, did he ever eat any chocolates or not? Or they will remember, see here, they have Michelangelo, or they'll have Leonardo da Vinci, or they'll have somebody like that. Nobody remembers who was the officer at that time, running with the file up and down. थैंक यू श्रीमाता जी। थैंक यू सो मच श्रीमाता जी। आपको कोटि 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 नमन श्रीमाता जी। श्रीमाता जी, हम सभी बच्चे आपकी शरणागत में आए हैं। हमारी शरणागत स्वीकार कीजिए श्रीमाता जी। हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हमें हमारा आध्यात्मिक उत्थान प्रदान कीजिए श्रीमाता जी। जैसा आप हमें बनाना चाहते हैं, हम वैसे ही बने। हमें ध्यान में उत्तम से उत्तम स्थिति प्रदान कीजिए श्रीमाता जी। थैंक यू श्रीमाता जी। थैंक यू सो मच श्रीमाता जी। श्रीमाता जी को नतमस्तक प्रणाम करेंगे और अपनी कुंडलिनी को उठाकर कवच को धारण करेंगे।
आज सुबह का ध्यान यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर इसी वक्त मिलेंगे। सभी सहजी भाई बहनों का हृदय से आभार। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।